Hello bachcho, welcome back to the Vardhan classes. My name is Tejvardhan and today we are back again with a new video of class 10 subject mathematics chapter number 13 that is statistics in which we are going to solve the exercise 13.1 जिसमें कि हम अभी तीन एग्जांपल देखेंगे जो कि लास्ट थ्री एग्जांपल्स है that is question number 7, 8 and 9. Okay, so without wasting time let's get started. Question number 7 is to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million that is ppm. ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हर एक मिलियन के पीछे कितने पार्ट्स है उस SO2 के, वो. ओके, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज. अब लोकेलिटीज क्या है? ये वाली जो है दिस इज लोकेलिटी व्हिच इज नथिंग बट आवर फ्रीक्वेंसी एज वेल, राइट. अब ये कितनी है? सिग्मा fi इज 30. ओके, 30 लोकेलिटीज का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है ऑफ अ सर्टेन सिटी. नाउ फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन देयर. अब एयर में SO2 का मीन कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना है, राइट. एज वी हैव डिस्कस्ड, we have already solved first three examples using all the three methods. Now remaining examples we are going to solve using direct method, right? So we will solve this example using direct method. अब direct method का formula क्या होता है? x bar which is nothing but a mean is equals to sigma fi xi upon sigma fi. See, we have sigma fi value, right? Now what you have to find? This fi xi. For this, what is the most important part? That is xi, which is nothing but the क्लास मार्क, राइट. अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? हमने अब तक 6 एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें आपको पता ही है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. या फिर दूसरा एक तरीका जो कि शॉर्टकट है, व्हाट यू कैन डू, सिंपली लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अब इनका डिफरेंस देखो, जितना डिफरेंस है उसका आधा कर दो और लोअर लिमिट में ऐड कर दो. अब यहाँ पे डिफरेंस है 0.04, तो उसका आधा हो गया 0.02, उसको लोअर लिमिट में ऐड करेंगे दैट इज 0.02. सिमिलरली 0.06, 0.10 आना चाहिए, राइट. देन 0.14, 0.18 एंड 0.22. क्लियर है? नाउ fi xi इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद क्लास मार्क. तो fi xi की वैल्यू निकालते हैं, राइट. तो 4 to the 8 that is 0.08. देन 9 6 54, तो 54 तो लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इट मींस दैट हमें दो डिजिट्स छोड़ के पॉइंट देना है. तो दो डिजिट्स छोड़ के पॉइंट आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा. इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सिंपली रीअरेंजिंग और डेसिमल्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं. क्लियर है? 9 10 जा 90, सो 0.90, देन 0.28, नेक्स्ट 0.18 for the 72, next 0.44. Clear है? Now if we add all these entries, what we will get? We will get the value of sigma fi xi. So 4 plus 2 6, 6 plus 4, sorry 6 plus 8 14 plus 4 18 plus 8 26 का 6, carry 2, 4 plus 2 6 plus 7 13, 14 15 24 29, 29 का 9, carry 2, point दे दो 2. Okay, now here we can see we have the value of fi, that is sigma fi, that is 30, and the value of sigma fi xi which is nothing but 2.96. Now we will put on these values in the given formula, that is 2.96 whole divided by 30. If you first add the decimal, sorry adjust the decimal, add नहीं करना है, adjust करना है. कैसे? डिनोमिनेटर में जीरो है, and as you know that अगर डेसिमल पॉइंट, सॉरी डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 0.296 होल डिवाइडेड बाय 3, राइट. अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? ऑलरेडी अपना जो न्यूमरेटर है वो डेसिमल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अपना आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट, राइट. तो हमें सॉल्व करना है, मींस डिवाइड करना है 296 विद 3, राइट. नाउ विल फर्स्ट डिवाइड 2 बाय 3. तो हमें पता है कि 3 से 2 को डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा? एक साथ दो डिजिट्स लेने होंगे. नाउ एज यू रिमेंबर, या फिर जैसे आप लोगों ने पहले से पढ़ा है कि जब हम एक साथ दो डिजिट्स लेते हैं, अगर ये केस सी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं. इवन मैंने देखा है कि कई कई टीचर्स भी गलती कर देते हैं. समटाइम्स अगर मैं जल्दबाजी में हूं तो मैं भी ऐसी जगह पे गलतियां करता हूं. ओके, सपोज अगर ये वाला जो नंबर है, ये नंबर सिंपल ऐसे होता 296 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं. ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पहले नंबर को डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक साथ दो नंबर ले. जब एक साथ दो नंबर नीचे आते तो ऊपर क्या होता है? प्लेस वैल्यू एडजस्ट करने के लिए हम एक जीरो ऐड करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? 3 9 जा 27, राइट. उसको हम सॉल्व करते जाएंगे. नाउ
जैसे कि आपको पता है 09 लिखो या 9 लिखो, बोथ थिंग्स आर सेम, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट, जब ये डेसिमल पॉइंट की कंडीशन में आता है, so at that time 0.9 and 0.09, these two values make the huge difference. Okay, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर जो डिवीजन है, स्पेशली मैं इतने स्लोली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्लेस वैल्यू के जो एडजस्टमेंट है उसमें गड़बड़ी ना करो. ओके, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी डेसिमल में स्टार्ट हो रही है. इट मीन दैट हमें 0 पॉइंट से स्टार्ट करना होगा. राइट नाउ, अब एज वी नो कि 3 कैन नॉट डिवाइड 2, क्योंकि टेबल में ही नहीं आता है ऑब्वियसली. तो हमें क्या करना होगा, एक साथ दो डिजिट्स को डिवाइड करना होगा. जब एक साथ दो डिजिट्स हम लेते हैं तो क्या होता है, वी एडजस्ट द प्लेस वैल्यू. इट मींस दैट वी एडजस्ट 1 0 इन द क्वोशंट. राइट नाउ, अब इसको हम रेगुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है, ताकि हम अब इस कंडीशन में हमारा आंसर गलत नहीं होगा. तो अब क्या है, यहाँ पे 3 9 जा 27 माइनस किया, so this is 2, next number is 6, then 3 8 जा 24, अगेन 2, नेक्स्ट नंबर. अब तो पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे 0, ऊपर कुछ देने की जरूरत नहीं, बिकॉज अपना नंबर्स यहाँ पे देखो हमारे डेसिमल नंबर के बाद स्टार्ट हो रहा है, एंड वी नो दैट कि डेसिमल नंबर के बाद देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस. राइट, तो जहां तक डिवीजन खत्म नहीं होता वहां तक हम ले सकते हैं. बट हमें ये चीज भी पता है, अगर डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है, इफ द particular set of numbers is getting repeated again and again, so what we do, we stop division right there. तो यहाँ पे क्या आएगा 18. राइट, quotient 2 है, सॉरी quotient 6, again 2. It means that here this 6 will keep on repeating again and again. Right, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, this is 0.0986, which is, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो वैल्यू ऑफ x बार इज 0.099 ppm, that is parts per million. Clear है, it means that the concentration of SO2 parts per million is 0.099. Clear है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट. अब 40 बच्चों का एब्सेंटी रिकॉर्ड है. बेसिकली दिस इज आवर सी आई एंड दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई. सो 40 बच्चों का रिकॉर्ड, व्हाट डज दैट मीन, दिस इज नथिंग बट द सिग्मा एफ आई. राइट, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, विच इज 40. And also check one thing, whether the class intervals are continuous or not. So as we can see, all the classes are continuous in nature. Okay, now find the mean number of days a student was absent. मतलब mean number of days find करने की कितने दिन एक स्टूडेंट एब्सेंट था. So we'll solve this example again with by direct method. Right, to find the direct method what we need class mark. डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, इनका डिफरेंस 4, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड करना है. सो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 6 प्लस 2 इज 8. अगेन 14 माइनस 10 4, लोअर लिमिट में कितना ऐड करना है 2, दैट इज 12. नेक्स्ट द डिफरेंस इज 6, सो 6 का हाफ 3, 14 प्लस 3 इज 17. difference is 8, so half is 4, 20 plus 4 is 24. difference is 10, so half of 10 is 5, so 28 plus 5 is 33. And here the difference is 2, so half of 2 is 1. Right, so this is 39. Right, now the last column that we have to find is fixi, that is product of frequency with class mark. तो क्या करना है, 11 3 जा 33, then 10 8 जा 80. Next 12 7 जा 84, 17 4 जा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 का डबल इज 68, 24 4 जा 96, then 33 3 जा 99, the last one 39 1 जा 39. Right, now we have to find sigma fi xi. So let's count, 9 plus 9 18, 18 plus 6 24, 24 plus 8 32, plus 4 36, plus 3 sorry 18 18 24 32 36 39, 39 carry 3, 3 plus 3 6, 6 plus 9 15, 24 24 30, 38 38 46,
46 plus 3, 49. Right, so 499. So here we have the values of sigma fi, which is 40, and sigma fi xi, that is 499. Let's put all these values in the equation, that is sigma fi is equals to, sorry, x bar is equals to sigma fi xi whole divided by sigma fi. Now what is the value of sigma fi xi? That is 499 whole divided by 40. Now we'll keep 0 aside and simply divide 499 by 4. लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे विद जीरोस. ओके, सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0. नेक्स्ट नंबर 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1. नेक्स्ट नंबर 9, 4 6, सॉरी 4 4 जा 16. सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज 3 0. अब डिजिट्स नहीं है तो नीचे 0 ऊपर पॉइंट, तो आ जाएगा 4 7 जा 28. रिमाइंडर विल बी 2 0, दैट इज 4 5 जा 20. सो रिमाइंडर इज 0 0. ना अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, राइट, एंड एज यू नो व्हेन देयर इज अ जीरोस इन द डिनोमिनेटर, तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द डिजिट्स, मतलब आंसर के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. तो जो भी ये 124.75 है, इसका पॉइंट कहाँ आएगा? बेसिकली इन बिटवीन 2 and 4. सो द आंसर विल बी 12.475. क्लियर है? इफ वी राउंड अप दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100, और हाँ, नियरेस्ट 100 तक अगर हमने इसको राउंड अप किया, सो व्हाट वी विल गेट? 12.48. दिस इज आवर mean number of days a student is absent. Clear hai? Now let's move on to the question number 9 and the final question of this exercise 13.1. Question 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Total 35 cities का क्या है? literacy rate हमें दिया है जो कि percentage में. So it means that this FI, तो इसका whole sum क्या हो जाएगा? It is 35, right? One more thing. Check whether the classes are continuous or not. As you can see, all the classes are continuous in nature. Now, again, we'll solve this example using by direct method. Right? So the formula for direct method is x bar, that is mean, equals to sigma fi xi whole divided by sigma fi. Right? Now, the important thing means the important value to find the mean using direct method is the class 1. कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता है? डिफरेंस निकालना है हमें, उसका आधा करना है, लोअर लिमिट में उसको ऐड करना है. सो द डिफरेंस इज 10, 10 का हाफ 5, 45 प्लस 5 इज 50. सिमिलरली डिफरेंस इज 10, हाफ करना है 5, 55 प्लस 5 इज 60, एंड इट गोज ऑन द सेम बिकॉज द डिफरेंस इज सेम एंड क्लासेस आर आल्सो कंटिन्यूअस. So their class mark will gradually increase by 10. Now the last column of fi xi, अब इसे क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद क्लास मार्क. सो 5 3 50, सॉरी 5 3 15, so total is 150. Then 600, 11 7 77 and a 0, 8 8 64 and a 0, 9 3 27 and a 0. Now the final value that we will require is sigma fi xi. If we add all the zeros, the outcome will be 0. Then 4 plus 7 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 5 is 23, so 3 carry 2, 2 plus 2 4 plus 6 10, 17 23, 23 24. Okay, so we have the values of sigma fi, that is 35, and sigma fi xi, that is 2430. If we substitute all these values, so we'll get 2430 whole divided by 35. Right now, all these literacy rate is in percentage. It means that in the final answer we have to add the percentage sign. Okay. Now, अब 35 का टेबल ना मुझे आता है and probably आप में से बहुत सारों को नहीं आता होगा, लेकिन we have a trick. What we can do? Simply first write the 35, उसका डबल कर लो 70. Now add the first term and the last term. That is 5 plus 0 is 5, 7 plus 3 10. Now the first term and last term, that is 5 plus 5 0, 4 1,
then again 5, 7, 1, last is 2, 1, 0, right? Then 5, 4 and 2. So see, this number is getting, अब हमें करना क्या है, 2, 2, 4, 3, 0 को divide करना है with 35. This number is getting bigger, so we'll use this 210, right? So it comes on the sixth position. So 35 6 are 210. If we subtract this, so 3, 2, no, not 2, it is 3, 0 again. So यहाँ पे आएगा 0, 8 and 2, then 5, 1, carry 1, 3. So it is 6, 7, 8, 9. Okay, 9, 3, 1, 5. So this is 150. Point रखना होगा because अपने पास आगे zeros नहीं है, right? Next, it will fall on this 4, 140. Remainder is 10. 0 रख दो, so automatically 2. It means that simple. This is 69.42%. As you can see, there is no need to round up the numbers, right? It means that the mean literacy, sorry, the mean literacy of 35 cities in the percentage is 69.42. क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दिए अच्छे से समझ में आ गए. इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो अलोंग विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके. एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सॉरी हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड करूं आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के साथ. टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू.